इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, इफ cos a plus cos square a equal to 1, prove that sin square a plus sin to the power 4a equal to 1. First we write question. Given cos a plus cos square a equal to 1, and we have to prove that sin square a plus sin to the power 4a equal to 1. We assume it equation 1 now. From equation first we have cos a plus cos square a equal to 1. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos square a equal to 1 minus sin square a. So we write cos a plus cos square a, that is 1 minus sin square a equal to 1. We cancel 1 by 1, so we get cos a minus sin square a equal to 0. So cos a equal to sin square a. We assume it equation 2. So sin square a plus sin to the power 4a equal to, यहाँ हम sin square a plus sin to the power 4a को sin square a to the power 2 लिखेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे sin square a equal to cos a from equation 2. So sin square a, that is cos a, plus sin square a whole square, that is cos a whole square. We can write cos a plus cos square a. यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे cos a plus cos square a, that is 1, from equation first. Therefore sin square a plus sin to the power 4a equal to 1. Proved. Now we will solve question number 82. If cos theta plus cos square theta equal to 1, prove that sin to the power 12 theta plus sin 3 into sin to the power 10 theta plus 3 into sin to the power 8 theta plus sin to the power 6 theta plus 2 into sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta minus 2 equal to 1. First we write question. Given cos theta plus cos square theta equal to 1.
we have to prove that sine to the power 12 theta plus 3 into sine to the power 10 theta plus 3 into sine to the power 8 theta plus sine to the power 6 theta plus 2 into sine to the power 4 theta plus 2 sine square theta minus 2 equal to 1. Cos theta plus cos square theta equal to 1. इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 cos theta plus cos square theta equal to 1. यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे cos square theta equal to 1 minus sin square theta. So we write cos theta plus cos square theta, that is 1 minus sin square theta equal to 1. We cancel 1 by 1. So we get cos theta minus sin square theta equal to 0. So cos theta equal to sin square theta, that is sin square theta equal to cos theta. We assume it equation 2. So sin to the power 12 theta plus 3 into sin to the power 10 theta plus 3 into sin to the power 8 theta plus sin to the power 6 theta plus 2 into sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta minus 2. यहाँ हम sin to the power 12 theta को sin to the power 4 theta का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 into sin to the power 4 theta whole square into sin square theta. sin to the power 10 theta को sin to the power 4 theta whole square मल्टीप्लाई sin square theta लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू sin to the power 8 theta को 3 इंटू sin to the power 4 theta इंटू sin square theta whole square लिखेंगे. sin to the power 6 theta को sin square theta whole cube plus 2 into sin to the power 4 theta, that is sin square theta whole square plus 2 sin square theta minus 2. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब. यहाँ a हमारा sin to the power 4 थीटा है और b sin स्क्वायर थीटा. सो वी राइट sin to the power 4 theta whole cube plus 3 into sin to the power 4 theta whole square into sin square theta plus 3 into sin to the power 4 theta into sin square theta whole square plus sin square theta whole cube, that is sin to the power 4 theta plus sin square theta whole cube plus 2 into sin square
theta whole square plus 2 sin square theta minus 2. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin square theta equal to cos theta. So we write sin to the power 4 theta, that is sin square theta whole square plus sin square theta whole cube plus 2 into sin square theta whole square plus 2 sin square theta minus 2. Sin square theta, that is cos theta, cos square theta, sin square theta, that is cos theta whole cube plus 2 into sin square theta, that is cos theta, cos square theta plus 2 into sin square theta, that is cos theta minus 2. Cos square theta plus cos theta whole cube plus इन तीनों टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे, सो वी गेट 2 into cos square theta plus cos theta minus 1. यहाँ हम cos theta plus cos square theta equal to 1 पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. From equation 2. So cos square theta plus cos theta, that is 1 whole cube plus 2 into cos square theta plus cos theta, that is 1 minus 1, 1 cube, that is 1. We cancel 1 by minus 1, so we get 2 into 0, 1 plus 0 equal to 1. So sin to the power 12 theta plus 3 sin to the power 10 theta plus 3 into sin to the power 8 theta plus sin to the power 6 theta plus 2 sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta minus 2 equal to 1. Proved. Now we will solve question number 83. Given that 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma, so that one of the values of each member of this equality is sin alpha into sin beta into sin gamma. First we write question. Given 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma.
we have to prove that 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to sin alpha into sin beta into sin gamma. So now we let 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to x. So we can write 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to x. We assume it equation 1 and 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to x. We assume it equation 2. हम फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन को रैशनलाइज करेंगे. सो we take equation 1. So from equation 1 we have 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1. यहाँ हम 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा को रैशनलाइज करेंगे और इन तीनों को रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाय रैशनलाइजेशन we multiply 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma in numerator and denominator. So we write 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma. We multiply 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma in numerator and 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma. We also multiply in denominator equal to x. We can write 1 plus cos alpha into 1 minus cos alpha one plus cos beta into 1 minus cos beta 1 plus cos gamma into 1 minus cos gamma
upon 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma इक्वल टू x। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So we write 1 plus cos alpha into 1 minus cos alpha, that is 1 square minus cos square alpha, 1 plus cos beta into 1 minus cos beta, that is 1 square minus cos square beta, 1 plus cos gamma into 1 minus cos gamma, that is 1 square minus cos square gamma upon 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta to 1 minus cos gamma equal to x. That 1 minus cos alpha cos square alpha into 1 minus cos square beta to 1 minus cos square gamma, 1 minus cos alpha 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to x। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 minus cos square theta equal to sin square theta। So we write 1 minus cos square alpha, that is sin square alpha, 1 minus cos square beta, that is sin square beta, 1 minus cos square gamma, that is sin square gamma, upon 1 minus cos alpha to 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to x। So sin square alpha into sin square beta to sin square gamma upon 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta to 1 minus cos gamma equal to x. We assume it equation 3. Now we multiply equation 2 and 3. Multiplying equations 2 and 3, we get sin square alpha into sin square beta into sin square gamma upon 1 minus cos alpha to 1 minus cos beta to 1 minus cos gamma into 1 minus cos alpha 1 minus cos beta to 1 minus cos gamma equal to x into x। We cancel 1 minus cos alpha by 1 minus cos alpha, 1 minus cos beta by 1 minus cos beta, 1 minus cos gamma by 1 minus cos gamma. So we get sin square alpha into sin square beta into sin square gamma equal to x square. So root over sin square alpha into sin square beta into sin square gamma equal to x. So x equal to sin alpha into sin beta into sin gamma. So we can say that
1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma equal to sin alpha into sin beta into sin gamma. Proved. Now we will solve question number 84. If sin theta plus cos theta equal to x, prove that sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta equal to 4 minus 3 into x square minus 1 whole square upon 4. First we write question. Given sin theta plus cos theta equal to x, we have to prove that sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta equal to 4 minus 3 into x square minus 1 whole square upon 4. Now sin theta plus cos theta equal to x, squaring both sides, and we get sin theta plus cos theta whole square equal to x square. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर equal to a square plus b square plus 2ab. यहाँ a हमारा sin थीटा है और b cos थीटा. So we write sin theta plus cos theta whole square, that is sin square theta plus cos square theta plus 2 into sin theta into cos theta equal to x square. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. So we write sin square theta plus cos square theta, that is 1 plus 2 into sin theta into cos theta equal to x square. We write 2 sin theta into cos theta equal to x square minus 1. So sin theta into cos theta equal to x square minus 1 upon 2. So sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta, या हम sin to the power 6 theta को sin स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं और cos to the power 6 theta को cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a plus b whole cube minus 3 into a into b into a plus b.
यहाँ a हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और b कॉस स्क्वायर थीटा. So we can write sin square theta whole cube plus cos square theta whole cube, that is sin square theta plus cos square theta whole cube minus 3 into sin square theta into cos square theta into sin square theta plus cos square theta. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. So we write sin square theta plus cos square theta, that is 1 whole cube minus 3 into sin square theta into cos square theta. Sin square theta plus cos square theta, that is 1. So we get 1 minus 3 into sin theta to cos theta whole square. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे sin theta into cos theta इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. सो वी राइट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. वी ऑल्सो राइट 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 whole square upon 4. Now we solve 4 minus x square minus 1 whole square. So sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta equal to 4 minus 3 into x square minus 1 whole square upon 4. Proved.